Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Shivangi. Let's see what we have lined up for you this week. Awami Action Committee staged protest against various issues in illegally occupied Gilgit-Baltistan. Protest organized on Black Day in illegally occupied POK. Capacity building workshop held to promote traditional drug in Kashmir. Authorities set up crop procurement mandis in Kathua district. And in our section on Incredible India, we'll take you to witness this year's Diwali celebration. While governments all over the world invest in the growth and development of their citizens, the administration in the illegally occupied Gilgit-Baltistan does not make a hint of an effort to fulfill its citizens' most basic needs. Recently, an anti-government protest was staged by the Awami Action Committee in which it demanded immediate resolution of several local concerns, including inflation, taxes, wheat subsidies and electricity bills, among others. We bring you a story. People in the illegally occupied Gilgit-Baltistan have been living as second-class citizens in their own homes for more than 7 decades. Reason: Pakistan and its stooges, who not only misgovern the region, but also see to it that its citizens are not accorded even the minimal standards of dignity. The residents have gotten furious as a result of the decades-long persecution, and they are now fighting for their rights on the streets virtually every day. Recently, people turned up in large numbers to call out government's hypocrisy and incompetence after the local political and social organization Awami Action Committee called for a demonstration. They said that the policies being formulated were primarily anti-people and had the only purpose of further repressing the already marginalized people of the area. हमारे इश्यूज हैं, सब्सिडीज है, बिजली का बिल है, हमारा वो है टैक्सेस का मसला है, रेवेन्यू वाला है और हमारे खालिसे सरकार और हमारे मादनियात का है। सब्सिडी का तो कोई मुज़ाकराती टीम नहीं है, बल्कि उसमें यहाँ कटौती हो गई है और नाकिस है, गंदम है, दूसरे का रेट बढ़ना है, उनके इनके हाथ में है। यहाँ मुकामी जो है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट के हाथ में, वो तो ये अभी भी कर सकते हैं, थोड़ी देर के बाद भी कर सकते हैं। कल उसमें पेशरफ्त हुई थी और दूसरे जो इश्यूज हैं वो डायलॉग के हैं, वो असेंबली के इश्यूज हैं, उस पर भी कोई टाइम लगेगा। The residents' top demand is the subsidy for wheat. Numerous demonstrations against the reduction in wheat subsidies have been held recently, but the authorities have paid no heed to the local struggle. Another significant challenge that the people are dealing with is the soaring price of electricity. Locals demand that the tariffs should be reduced. Also, the Revenue Act is still being aggressively resisted. According to protesters, the legislation has added extra taxes to 135 different commodities. These levies are adding insult to injury for people of Gilgit-Baltistan, who are already suffering as a result of the electricity tariff hike. यहाँ पे हम 5 मुतालबात लेके आए हैं जो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतालिक हैं। पहला गंदम सब्सिडी के हवाले से है। हमारा मुतालबा है कि गंदम का साबिक़ा रेट बरकरार रखा जाए और उसके साथ साथ गंदम की मकदार पूरी करके आवाम तक जो है मुकम्मल जो जिस तरह साबिक़ा दौर में पहुँचाया जाता था सब्सिडी रेट पर 40 kg का थैला जो आवाम तक पहुँचाया जाए। उसके साथ साथ बिजली का टैरिफ जो है वो बढ़ाया जा रहा है। हमारा मुतालबा है कि बिजली का टैरिफ जो है साबिक़ा बरकरार रखा जाए, नए इजाफे को हम नामंजूर करते हैं। उसके रेवेन्यू एक्ट को हम मुकम्मल मुस्तरद करते हैं, उसके खिलाफ आज हम एहतजाज में हैं। इसके साथ साथ लीज़ जो गैर मकामी अफराद को मकामी लोगों को एतमाद में लिए बगैर दिया जा रहा है बल्कि नवाजा जा रहा है, हम उसके खिलाफ यहाँ पे एहतजाज में हैं।
The people of illegally occupied Gilgit-Baltistan have once again spoken out against the stepmotherly treatment they have been accorded by the government. They place the blame on the ineffective and incompetent regional leaders who only care about serving their masters in Islamabad and have no interest in acting in the region's best interests. Kashmiris in Pakistan-occupied Kashmir as well as abroad staged a massive protest against Islamabad on Black Day. The protest was organized by the United Kashmir People's National Party, led by Sardar Shaukat Ali Kashmiri, to remember the horror when thousands of mercenaries killed thousands of Kashmiri civilians, violated their women, plundered their valuables and destroyed properties. We have a report. Few days after Pakistan was carved out of India in 1947, it dispatched armed irregulars and then regular troops to invade Kashmir. The Pakistan Army codenamed the Kashmir mission as Operation Gulmarg. October 22 is observed as Black Day when thousands of Pathan raiders killed uncounted Kashmiri civilians, raped their women and destroyed property. On this day every year, the Kashmiris living in Pakistan-occupied Kashmir and abroad hold massive protests against Islamabad. They still recount the horror committed 75 years ago. On 22nd of October 1947, Pakistan Army under the command of Major Khurshid Anwar, disguised as tribals, invaded Muzaffarabad through Neelam Bridge, killed innocent citizens, thousands of innocent citizens, including women, children and elderly, looted their properties, burned the properties down and murdered everybody who came in their way. October 22nd was observed as Black Day by holding protests in cities like Muzaffarabad, Rawalpindi and other parts of Pakistan and its occupied territories. The United Kashmir People's National Party, led by Sardar Shaukat Ali Kashmiri, organized worldwide protests against the tribal invasion. The unprovoked aggression that divided families and people of Jammu and Kashmir is the main cause of present miseries and troubles on both sides of the forced division. In Pakistan-occupied Kashmir and Gilgit-Baltistan, the people are still denied their basic rights like education and health. Political activists said the civilians in Pakistan-occupied Kashmir are living a miserable life. We are facing the worst imaginable violation of basic human rights. All our freedoms, political rights, civil rights, religious rights, and right to live, everything has been taken away. Our resources are being plundered and we are left to live in a living hell. Pakistan has been plundering the natural resources of Pakistan-occupied Kashmir and Gilgit-Baltistan. Unfortunately, the people in these regions are facing severe problems like irregular drinking water and electricity supply. In Gilgit-Baltistan, Pakistan has even allowed China to plunder natural resources. The region is facing the worst environmental threats due to the ongoing construction of the multi-billion-dollar China-Pakistan economic corridor. Authorities have been doing their best to empower women in the valley. In line with the same, the PhD Chamber of Commerce and Industry, in association with the Directorate of Handicrafts and Handloom of Kashmir, organized a capacity-building workshop for women artisans to promote a traditional drug called Namda in Kashmir. The Handicrafts Department, through these capacity-building programs, aims to preserve and revive the rich heritage and culture of Kashmir. Take a look.
J&K administration keeps on taking a number of initiatives to empower the women folk of the territory and make them self-reliant and independent. Taking a recent step in the same direction, a capacity building workshop was recently organized in Srinagar city for female artisans for training them in Namda art, a type of traditional Kashmiri embroidery done on rugs and carpets. कैपेसिटी बिल्डिंग तो बहुत ज़रूरी है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हो, स्कूल ऑफ डिज़ाइन हो या जो हमारे सेंटर्स हैं, हर जगह पे यही फोकस है कि नए इनोवेशंस लाएं। और हम कोशिश कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक निफ्ट है, एनआईडी है या जो डिज़ाइनर्स बाहर से आते हैं उनके साथ मिलजुल के प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें। Organized by the Directorate of Handicrafts and Handlooms of Kashmir in association with the PhD Chamber of Commerce and Industry, this workshop was held at the Conference Hall of Kashmir Haat in Srinagar. The capacity building program was third in line in a series of workshops being conducted by the Ministry of Commerce and Industry for promoting local handicrafts and encouraging more people to manufacture them. An interaction session was held between artisans and the Director of Handicrafts and Handloom Kashmir, which aimed at educating the women about traditional furnishings and new designs. Artisans also visited workshops and museums established by the School of Design, where different varieties of Kashmiri arts, including Namda, were put on display. हम यहाँ पे आए थे, मतलब यहाँ पे अवेयरनेस कैंप था नमदे के बारे में, जो यहाँ पे सर ने बोला था कि यहाँ पे आए अवेयरनेस के लिए कि यहाँ पे मार्केटिंग के बारे में या डिज़ाइन कैसे बनाते हैं उसके बारे में बोलते हैं, नई नई डिज़ाइन कैसे इनको अप्रूवल कर सकते हैं या पैकेजिंग का। तो इसलिए यहाँ पे आए हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमें अवेयरनेस मिली, इसलिए ये प्रोग्राम था यहाँ पे। अब यही चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, मतलब जो भी लड़कियाँ हैं पीछे रह गई है उनको इससे आगे जाने का मौका मिले, या चाहे हैंडीक्राफ्ट वर्क हो, कोई भी काम हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा शिरकत करे लड़कियां। Namda is a type of traditional Kashmiri felted carpet that is created using sheep wool and has colorful hand embroidery. The distinct feature of this Kashmiri craft is that wool is felted and not woven. The Handicrafts Department, through these capacity building programs and other training programs, are trying to revive the rich heritage associated with Namda in Jammu and Kashmir. These programs play a vital role in advancing the manufacturing process of Namda. ये नमदा का क्राफ्ट जो है इसमें बोथ मैन फोक और वुमेन फोक इन्वॉल्व है। नमदा बनाना जो है वो थोड़ा लेबोरियस जॉब होता है, उसको यूजुअली जो है मर्द लोग बनाते हैं और उस पर जो नक्काशी होती है वो फीमेल्स करते हैं। तो ये एक घर में जो है हो सकता है, और हमारा ये जो है नवहटा में एक नमदगिर महला के नाम से ही जाना जाता था, जहाँ पे ये हब रहा है इस नमदा मेकिंग का। तो आज की डेट में रनावारी हो, नमदगिर महला हो, डल के इंटीरियर्स हो, तो बहुत जगहों पे ये जो है काम चलता है। और खुसूसन जो इस पे नक्काशी है वो जो है लेडीज़ ही करते हैं, और ये जो है घरों में होता है, अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है। इसमें बड़ी इनोवेशंस हुई हैं। अभी हमने लास्ट ईयर एक नमदे वाले को अवार्ड भी दिया था जो पश्मीना नमदा एक्सपोर्ट इटली करता था। तो इसमें जो है नई इनोवेशंस लाने की ज़रूरत है, नए प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने की ज़रूरत है। As women are said to be the building blocks of society, their empowerment at the grassroots level will not just create a positive impact but also give a boost to the rural economy. It is initiatives like these that are not only helping women in Jammu and Kashmir to become more skilled but is also instilling a newfound confidence in them. The hilly areas of Jammu and Kashmir have favorable soil and climate conditions for the production of high-quality traditional crops like paddy. Over the years, the production of paddy crop has grown rapidly in the territory. Authorities therefore keep on taking a number of steps to help farmers in different ways. Moving on the same lines, authorities set up crop procurement mandis for the procurement of paddy crops from farmers in Kathua city. Take a look.
The harvesting season of paddy crop is in full swing in Jammu and Kashmir, and authorities are taking a number of steps for helping the farmers in deriving maximum profits for their produce. In Kathua city, paddy procurement mandis have been set up by the authorities so that farmers in the region can get fair price for their crops. The target for this year procurement mandis is to procure more than 2.5 lakh quintals of paddy crops in Kathua district. पिछली बार हमारी 2.5 लाख क्विंटल जो है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो है प्रोडक्शन हुई थी और पिछली बार हमारी 10 मंडियां थी। इस बार हमें एक मंडी की जो है एडिशन हुई है, जो कि वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों की जो खास डिमांड पे उसको बनाया, एडिशनल मंडी बनाई गई और हम इस बार वो कर रहे हैं कि इस बार 2.5 लाख क्विंटल से और भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हमारे कुछ ही चांदी की दिनों में हमारी टोटल मिलाकर 37,000 क्विंटल जो है प्रोडक्शन हमारी जो है इस समय जो FCI के गोदाम में जो है माल जा चुका है और कम से कम 264 बेनिफिशियरी जो किसान भाई जो हैं वो अपना माल दे चुके हैं। These centers are set up by the Department of Agriculture and Food Corporation of India to speed up the process of crop procurement in the region. In Kathua, 11 procurement centers have been made operational this year for accommodating and procuring paddy crop from farmers. Farmers were happy as now they are getting fair prices for their crops at a single place without any hustle or bustle. बाहर का रेट तो अपनी मर्जी का है, चाहे जितना मर्जी ले लें। यहाँ तो अगर 200 रुपया और 70 पैसे ऊपर भी होंगे वो भी हमें मिल जाएंगे, वहाँ किसी लोकल आदमी को थोड़े मिलेंगे। जाएंगे वो पैसे, पहले तो काटर लगाएगा, उसके बाद वो कहेगा ये पहले तो वो पक्का मारेगा, पक्का तो यहाँ भी मरना है, लेकिन काटे जब लगाएगा ना 2-4-5 किलो के हिसाब से वो काटर लगाएगा तो हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। The minimum support prices for these crops have also been increased so that farmers can get a fair price for their produce. The Government of India has listed MSP of refined paddy at ₹2,060 per quintal and ₹2,020 per quintal for non-refined paddy. These mandis are beneficial as through these, farmers are able to sell their crops directly to the authorities and eliminate the middlemen who often give low prices to farmers for their produce. किसानों की आपने देखा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है पिछली बार से जो है काफी 100 रुपया जो है वो ज़्यादा है। इस बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2020 जो है वो कॉमन की है और 2060 जो है वो ग्रेड A की है और उससे जो है फार्मर को काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो रही है। और हमारा ये मंडियों खोलने का यही प्रयास होता है कि जो डिस्ट्रेस सेल जो है, जो मीडिएटर जो है बीच में लोग जो है वो डिस्ट्रेस सेल फार्मर को करने पड़ती है और जो व्यापारी जो है वो औने पौने दाम पे जो है इनसे खरीद ले लेता है। तो वो उसको चीज़ को रोकने के लिए हमारा ये प्रयास जो है, जो सरकार ने ये प्रयास किया है और उसमें हमारा जो है ये टारगेट भी जो है आपने देखा 2.5 लाख क्विंटल, हमारे अगर जम्मू प्रोविंस में पूरी जो है 4 लाख क्विंटल के 4.5 लाख क्विंटल के करीब प्रोडक्शन होती है, तो जिसमें सिर्फ कठुआ अकेला डिस्ट्रिक्ट ही 2.5 लाख क्विंटल जो प्रोड्यूस देता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। Paddy is a popular traditional crop of Jammu and Kashmir, and a major portion of land is under paddy cultivation in the territory. Authorities in the territory keep on taking a number of steps to help farmers in generating good income and improve their socio-economic condition.
Next, we move on to our section Incredible India, where today we will take you to witness this year's Diwali celebration. One of the most popular festivals in Hinduism, Diwali is a post-harvest festival celebrating the bounty following the arrival of the monsoon in the country. Though the core reason behind its celebration remains the same, that is victory of good over evil, one can witness several unique ways in which it is observed across the country. Let's take a look at a few. India brightens up as people across the country illuminate their homes with lights, candles and clay lamps to celebrate the most awaited and auspicious festival of Diwali. Marking the return of Lord Ram to Ayodhya after 14 years of exile, defeating Ravan, the powerful king of Lanka, the festival is observed with much pomp and show across the country. People decorate their houses, make rangolis and at night worship the Hindu goddess of wealth and prosperity, Lakshmi. It is believed that the goddess showers her blessings upon those homes that are clean and well lit. Later, people greet each other, exchange sweets and burn firecrackers to celebrate the festival. इसी टाइम तो बहुत अच्छा से बनाएंगे क्योंकि 2 साल से 3 साल से बंद था, तो इसी में हम लोग मैं चाहती हूँ कि दिया जला के घर का जो है हमारे जो पितृपुरुष लोग गए हैं उनके नाम पर अच्छा से पूजा पाठ करके और घर में दिया जला के अच्छा से मिठाई बना के नया ड्रेस पहन के दिवाली खुद से बनाएंगे। एक बात तो पूरा देखिए ना कितना सब लोग कितना खुशी है, कितना अच्छे से बना रहे। 3 दिन से सब लोग लगे पड़े हैं कि घर का सजावट करने के लिए, तो इस साल जरूर अच्छा ही बनेगा। Though Diwali celebrations are almost the same across the country, there are a few places where its festivities have a completely different touch. The one that tops the list is Ayodhya, the birthplace of Lord Ram. This holy land observes a grand Deepotsav as a part of the Diwali celebrations. The Saryu river ghats were embellished with diyas and colourful lights. More than 15.76 lakh earthen lamps were lit at the Ram Ki Paidi on the last day of the Deepotsav celebrations and has entered the Guinness Book of World Records. Over 50,000 visitors from across the country became part of this mega event. Legends say millions of lamps were lit when Ram returned after 14 years, and this event has been setting a new world record every year. साथियों, दीपावली के दीपक हमारे लिए केवल एक वस्तु नहीं है, ये भारत के आदर्शों, मूल्यों और दर्शन के जीवंत ऊर्जा पुंज है। आप देखिए, जहां तक नजर जा रही है, ज्योतियों की ये जगमग प्रकाश का ये प्रभाव रात के ललाट पर रश्मियों का ये विस्तार भारत के मूल मंत्र सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है। In Kolkata, Diwali is all about worshipping goddess Kali, the destroyer of evil. Beautifully decorated Kali pandals are installed, and at night Kali Pujo or Shama Pujo takes place at every nook and corner of the city. All the festivals are first celebrated in the Mahakaleshwar temple of Ujjain. After this, the festival begins across the country. The celebrations start with the lighting of the sparklers in the Mahakal temple, and the celebrations start in other parts of the country.
56 different types of dishes are offered to the deity. जो परंपरा है महाकालेश्वर मंदिर की, उस परंपरा अनुसार आज रूप चौदस पर्व मनाया गया। भगवान को रूप निखारा गया, उपटन लगाया गया और भगवान की भस्म पूजन संपन्न हुई और उसमें फुलझड़ी भगवान को लगाकर ये दीप महोत्सव के रूप में भी भगवान के साथ में दीप उत्सव मनाया गया है। यहाँ जो परंपरा है उस परंपरा अनुसार भगवान महाकाल को 56 भोग भी लगाया गया है और ये 56 भोग जो होता है, जो त्याग 4 महीने जो सब्जी और जो अन्न त्यागा जाता है, उन सबको कूट के भगवान का भोग बना के लगाते हैं। ऐसी परंपरा इस महाकाल मंदिर में है। In Goa, Diwali is dedicated to Lord Krishna destroying the demon Narkasur. Mammoth effigies of the demon are made and paraded through the streets. Later, they are burned down, marking the end of evil and darkness. Meanwhile, in Punjab, the festival was celebrated with great zeal and fervour. Even though Punjab has a massive population of Sikhs, the festival was celebrated with full enthusiasm. The third Guru, Amar Das, set the foundation stone of the renowned Golden Temple on Diwali, elevating the festival's significance in Punjab. The celebration goes on for several days. मैं दिवाली अमृतसर विच मना रही हूं। अपने आप बहुत खुशकिस्मत समझना चाहती हूं भी बाबा जी ने मैनू इत्थे बुलाया है। मैं बहुत टाइम तो सोच रही थी मैं दिवाली अपनी अमृतसर विच जाके मनावां। मैं फर्स्ट टाइम अपनी दिवाली इत्थे अमृतसर विच मनाना। Beginning with Dhanteras and ending with Bhai Dooj, Diwali is altogether a 5-day festival that in a true sense means ending all evils, cruelty and hatred towards one another. That's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care. एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।